नमस्कार। ओमिक्रॉन भारत में पांव पसार रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं जैसा दूसरे देशों में फैल रहा है। पर लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये तीसरी लहर तो लेकर नहीं आ जाएगा। कोरोना के पिछले 2 वेव्स का हमारा अनुभव काफी कड़वा रहा है, इसलिए हम ज्यादा डरे हुए हैं। और ये डर स्वाभाविक भी है कि क्या कुछ ही महीने के अंतराल में हमारी मेडिकल और सरकारी व्यवस्था सुधर गई है? क्या अब अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई है? क्या कोई कारगर दवा बाजार में उपलब्ध है? और क्या वैक्सीन हमें ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से बचा लेगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने हेल्थ फॉर ऑल के आज के एपिसोड में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है। We now enter the yoga session where we have with us Meher Munjal, a certified yoga teacher. Hello everybody, namaste. As you all know, my name is Meher Munjal and I am the founder of Yoga Connect, my company here in New Delhi, where I teach various forms of yoga and meditation and breath work. So basically, what is sound healing? All right. Sound healing is a technique, it's an ancient technique from Greece, where these Tibetan bowls were brought. And what these Tibetan bowls essentially do are when you strike them or rim them, they create the vibrational frequency. And that vibrational frequency, when played next to ourselves, close to our body, taps into the energy centers in our body and creates a sense of calmness, relaxation, and also essentially balances your energy centers, that is your chakras, and helps align the body with the mind and soul. Let us begin the sound healing. I will start from the lower body to the upper body. So it's better if you guys are sitting down. You can sit down, take earphone like I have put here, AirPod or earphone put in the ears. If you are lying down, then please lie down and put the earphone or AirPod and close your eyes. Be in a comfortable posture of Savasana. We now move on to another important session on Omicron, the latest variant of concern. How much fear is too much? You have a deeper understanding of social developments and the global dimension. You also say that the pandemic has exposed and exacerbated health inequalities. There are substantial differences in health across the country, which the pandemic has exacerbated. Professor Jo, can you also elaborate on this? See, one of my main studies about access to healthcare and inequity in healthcare and how to deal with it. That's one of my major research as well as my action. And incidentally, I work as advisor to the Ministry of Health in East Timor. So when the East Timor government got independent, I was there to assist the government to form the Ministry of Health on behalf of Australian government. So I worked on both theoretical level, academic level, as well as practical level. So this health inequity plays on national level and global level. The best example is access to vaccine, the COVID vaccine. In some countries, they have, for example, Australia, about 90% of the people got access to vaccine, whereas in some countries, 4%, 5%. But the COVID pandemic, one case anywhere is a COVID case everywhere. So this is one of the manifestation of health inequity. So COVID pandemic that amplified that health inequity,
particularly in the area of accessing vaccine. But in Indian context, it's a magnificent achievement that India reached about almost 160 crore vaccination. So that's from a public health point of view, that's a significant achievement. But from the COVID pandemic, that alone will help us, that we have to look at carefully. So I'll get into some of the analysis of that. Okay, we have a significant achievement when we look from 2020 March to 2021, end of 21. So today we are much more prepared than 2020 March when the lockdown was declared. And we have a significant understanding about how the COVID pandemic works. And we have a significant investment in the area of diagnostics, treatment, and a significant number of doctors, they know how to deal with a COVID patient. This was not the case about a year and a half. So within the short span of time, we expanded magnificently. So this is my introductory point I want to make. The latest variant of virus has presented them with a new challenge, with Omicron spreading at unprecedented speed and its ability to dodge immunity, whether from previous infections or vaccinations. The new threat has galvanized vaccine developers and public health officials. What direction should they be pushing? Should it be a booster dose or a Omicron-specific vaccine, or probably a bolder option of universal coronavirus vaccines that would aim to protect against every mutant of SARS as well as other coronaviruses? When you say a pan-coronavirus vaccine, which could be a kind of universal coronavirus vaccine, do we need that? Yes, we actually need a vaccine which can help us not only to fight against the ongoing variants, but also capable of providing us a protection against any future variant which we do not know that what level of mutations and where all those mutations may appear. So if you little bit look into the details of the Omicron, there is a huge mutation, right? There are almost close to 50 mutations happen since this particular variant. Majority of them lies in the spike protein, which is required for the interaction with the host cells. And this is something which what we are assuming, that those multiple of mutations might be helping in increasing the transmissibility, maybe actually increasing the immune escape of that variant. When we say immune escape, mostly it relies on the antibodies, the analysis that yes, it may escape a lot of antibodies. We should not forget that our immune system does not only relies on antibodies. We do have the T cells that comes into action when it is required for a protection against a virus. And here, on the basis of the current analysis that we have learned is, although there will be a major hit on the antibodies, there will be a very marginal hit expected on the T cells, which may actually help us to coordinate the response with antibodies and provide the protection. Do we need a booster? I think that is quite a lot of debatable, aspect, which we are seeing that in a lot of, the discussions are going on right now to decide whether we need a booster or not. क्या ओमिक्रॉन इम्यूनिटी को बाईपास करता है? तब आपने कहा था जस्ट वेट एंड वॉच. अभी क्या स्थिति है? अभी क्या ओपिनियन है? देखिए, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी होती है दो तरीके की है. एक तो वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी है एंड सेकेंड वन इज इन्फेक्शन के बाद, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं. जो केसेस अभी तक देखने को ज़्यादातर मिले हैं वह जो है दोनों ही ग्रुप में थोड़े से केसेस हैं. जैसे साउथ अफ्रीका में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है अच्छे खासे. ब्रेक थ्रू का क्लियर कट डेफिनेशन है कि 2 वीक आफ्टर द सेकेंड डोज को ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं. अगर 2 डोज शेड्यूल है और जॉनसन की जैसे 1 डोज शेड्यूल है तो 2 वीक आफ्टर द फर्स्ट डोज, इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है. सो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड ओमिक्रॉन आने के बाद भी है, डेल्टा के समय भी था. ओमिक्रॉन में जो इनिशियल केसेस थे, इवन जैसे हांगकांग में 2 ही इनिशियल केसेस आते, फर्स्ट 2 वह जो है आपके जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन थे, मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में था. सो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीन इम्यूनिटी को वह बाईपास कर रहा है. नाउ नेचुरल इम्यूनिटी को जो है
कुछ केसेस जो है मॉडलिंग के बेसिस पे एक पेपर भी पब्लिश किया है साउथ अफ्रीका ने, जिसपे कहा है, बट सीवियरिटी के बारे में कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद भी सीवियरिटी कितना कम हो रहा है या सीवियरिटी बढ़ रहा है उसका। जो अभी तक के जितने वेरिएंट थे उनको देखते हुए यही लगता है कि कोविड रिकवर्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें अगर री इन्फेक्शन होता भी है तो सीवियरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो जो अभी तक ग्लोबल एविडेंसेस हैं, द बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन वह है जो आपके कोविड रिकवर्ड है, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ होगी। देन सेकेंड नंबर वैक्सीनेटेड है, एंड अनवैक्सीनेटेड जो जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, दे आर एट द ग्रेटर रिस्क। डॉक्टर्स या IMA कहें तो कितना तैयार है इस, अगर थर्ड वेव आया ओमिक्रॉन के नाम पर, ओमिक्रॉन के रूप में थर्ड वेव आया, तो आप कितने तैयार हैं? क्योंकि पहला और दूसरा अनुभव हमारा बहुत खराब रहा है, चाहे सरकारी संस्थाओं के साथ हो, चाहे सरकारी अस्पतालों के साथ हो, ये कोऑर्डिनेशन की बहुत जबरदस्त कमी रही है। तो अब अगर तीसरा वेव आया तो आप कितना तैयार हैं? देखिए, आपने जो कहा कि हम कितना तैयार हैं और पहला और दूसरा वेव में कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी रही, तो मैं पहले ये बता दूं कि पहली और दूसरी वेव में अब तक करीब हमारे 2000 डॉक्टर्स की डेथ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 4 लाख डॉक्टर और देश में करीब 10 लाख डॉक्टर्स ने दिन रात लगकर जहां जहां उनको बुलाया गया, जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी, वहां वहां उन्होंने काम किया, दिन रात काम किया, बगैर समय को देखे हुए काम किया, 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम किया। उसी प्रकार से, उसी तत्परता से हम जो थर्ड वेव, पॉसिबल थर्ड वेव की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर थर्ड वेव आती है, तो मैं डॉक्टर संजय राय को और डॉक्टर निमेश को सुन रहा था, सबसे पहला काम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, सफाई कर्मचारी हों, इनको एडिशनल डोज या बूस्टर डोज लगनी चाहिए। सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। एडिशनल डोज के लिए, बूस्टर डोज के लिए इनको लगनी चाहिए, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो हमारा ये वर्कफोर्स तुरंत मोर्चे पर तैयार रहे। Earlier when the pandemic struck, people were all afraid. Then you could see a small waning of the fear factor. Now, of course, people have taken it easy. The economy has opened up. People are out. Of course, they're wearing masks. Some are not wearing masks. But have people, sort of taken this particular pandemic in their stride, and have they started learning to live with the pandemic? Dr. Pandav. This is a pandemic of fear rather than actual pandemic that is being taken. The deaths due to COVID-19, please correct me, Sanjay Rai, what is the percentage of deaths contributed by COVID-19 so far? 2%? Sanjay? Less than 2% globally. In India, it's around 1.4%. In adult population, above 45. In children, 0.0002. And look at the attention we are giving to a disease which is causing deaths less than 2% globally, 1.5% in India. This is totally distorted attention. We are totally neglected non-communicable diseases, cancer, people who are on immunosuppression therapy. This is the tragedy that we are going through. That would be my response to you. Very misdirected, hyper-exaggerated, and it has given a new branch of medical astrology. We are not practicing evidence-based medicine, but we are practicing eminence-based medicine. And here the cardiothoracic suggestions to the leaders. They are for medical astrology. Everybody gives his own opinion that Omicron will get over in January, February, March. And cardiology seems to be leading the pack. So they have become medical astrologers. That would be my final quote. अभी अस्पतालों की क्या तैयारी है? क्या आपके अस्पताल में नए केसेस आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि अभी बात हो रही है कि फर्स्ट वेव कोविड की आई, सेकेंड आई, तो सब लोगों की बहुत कुछ सिखाया उन्होंने दोनों वेव ने। अब जब ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं तो अस्पताल में अभी तक, अगर मैं यथार्थ अस्पताल की बात करूं, अभी तक हमारे पास कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, जिनको
जैसे बुखार हो गया, खांसी, जुकाम या इस तरह के, उनकी हम टेस्टिंग कर भी रहे हैं, तो पॉजिटिव अभी तक केसेस नहीं आ रहे हैं। पर हाँ, क्योंकि सेकेंड वेव में इतना कुछ सीखा, जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बेड अवेलेबिलिटी और ये सब, तो उस तरीके से सारी तैयारियां हैं। अगर बाई चांस आते हैं पेशेंट या कुछ है तो प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड और वो सब तैयार कर दिए गए हैं। पर अभी तक अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो अभी तक कोई पॉजिटिव पेशेंट हमारे अस्पताल में तो नहीं है। We now move on to the last session. That is, we have a session on mindful eating. What should be ideal, the food that we should be taken during winter and oncoming summer? At least starting with winter, because you all are going through a huge spell of cold season. All the parts of the country which had extreme cold, the concept of eating was about eating more fat and about eating things which in Ayurveda also are supposed to be warm for the body, which keep the digestive fire high, which keep the Agni, ignited. And that is what we need to keep continuing doing. There's a lot of local vegetables and fruits available at this point of time, all of which can be used in broths and soups and, gravies, things that can warm up the human body. For example, tomatoes, spinach, things which have lycopene, which have antioxidants, are very, very good to protect us from the common flu also, besides all other forms of viral illnesses that are around us. Essentially eat warm, essentially eat a lot of local and seasonal vegetables and fruits. Eat more fat in the right way, of course, the right type of fat, not oils and fried food, but healthy ghee and nuts and seeds that can keep you warm, because you require a little more energy to keep your body warm in the winters.